Hello class, welcome. Now we move on to the next concept, exceptions of the law of supply. If you see, we had completed the assumptions in the previous part. Okay, so before moving to the exception, let's revise the entire law. Okay, we studied that law says when there is more price, supply is more, when less price, supply is less. Right? So this is about statement of the law. Then we had explained the table and graph. After that, we went towards the assumptions to the law of supply. They are constant cost of production, constant techniques of production, no change in weather conditions, no change in government policies, no change in transport cost, prices of other goods remain constant, and no future expectation about the prices. So this is all about the law of supply and assumptions of law of supply. Okay, law says when price is more, supply is more. Now today we will study exceptions to the law of supply. They are labor supply, urgent need of cash, agricultural goods, perishable goods, rare goods, etc. Number one is supply of labor or labor supply curve. Very important. Okay. See, labor curve is nothing but the rate at which worker are ready to work at a given wages. मतलब कुछ वेजेस के ऊपर कितने आवर्स ऑफ वर्क आपके वर्कर्स रेडी है काम करने के लिए इज बेसिकली कॉल्ड एज अ लेबर कर्व. नाउ व्हाई इट इज an exceptions to the law of supply. See, initially when the wages rate increases, supposed laborers are paid 200 rupees per hour, they are ready to work 5 hours, 6 hours. Okay, then if the seller says I will pay you 400 rupees per hour, laborers are ready to work for 8 to 9 hours. Then the seller or the owner, okay, owner says that I will pay you 600 rupees per hour. But now, in spite of getting higher wage rate, the laborer are not ready to work for more longer hours. Why? Because the laborers prefer leisure over labor. उनको भी तो आराम चाहिए ना. They can't work like a machine. Okay, labor is a human being. He can't work like a machine. So here you see that wage rate is increasing, but laborers are not ready to work for more hours. Okay, that is leisure, that is labor curve is an exceptions to the law of supply. ओके देखो, जैसे कि यहाँ पे एक शेड्यूल दिया है, उसमें दिया है वेजेस रेट पर आवर 100 रुपीज़, वर्किंग आवर्स 5. ओके, देन 200 रुपीज़ हुआ, वर्किंग आवर्स 7, तो उसको इतना वेजेस रेट मिला टोटल. सो ऑन. बाद में जाके ये एक टाइम ऐसा आता है, एट दैट टाइम ही रिफ्यूज टू वर्क मोर, बिकॉज वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है, उसको भी तो आराम चाहिए. राइट. सो यहाँ पे व्हेन ही रिफ्यूज टू वर्क, सी सप्लाई कव, लेबर कव जो है वो सप्लाई कव के जैसे अपवर्ड मूविंग रहता है 200 तक, बट व्हेन हिज वेजेस पर आर इंक्रीजेस बट ही रिफ्यूज टू वर्क मोर, सो तभी ये सप्लाई कव क्या होता है, बैकवर्ड बेंडिंग होता है. Okay, so this is what exception to the law of supply. Okay, that's why supply curve started bending backward. How? Because labor prefers to leisure over the labor. So एक पर्टिकुलर लिमिट तक लेबर जो है वो ज़्यादा वेजेस को वर्क करेगा, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब भी वो 12 घंटे 13 घंटे काम नहीं करेगा, ही विल प्रेफर कि मुझे कम वाला पेमेंट ही दे दो, मैं कम मार्जिन से काम करूँगा. Clear? So that is why law of supply is saying more price, more supply. But in this case, when wages rate is more, but
worker is giving his less working hours. Clear? That is why supply curve is backward bending curve. Okay, now second one is agriculture goods. Okay, see, agriculture goods are exceptions to the law of supply. Why they are exceptions to the law of supply? So here is the answer. Agriculture goods does not depends on price, they depends upon the weather condition. वेदर ही अगर फेवरेबल नहीं होगा, will you get the supply? No. That is why they are exceptional cases to the law of supply. Okay, एग्रीकल्चर गुड्स प्राइस के हिसाब से नहीं चेंजेस सप्लाई होता है. वो अगर क्लाइमेट ही खराब रहेगा, प्राइसेस बहुत ज़्यादा लेकिन क्लाइमेट ही खराब नहीं होगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, देन देयर विल बी द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स? नो. So that is why agriculture goods is also one of the exceptions to the law of supply. Next is perishable goods. Okay, so perishable goods क्या है? Okay, like if you remember, milk, fruits, eggs, they have very short lifespan. Okay, so you can't store them for a higher price, नहीं तो आपका माल ही बिगड़ जाएगा, right? Okay, so whatever price you get, you will sell it and you will finish it off. So perishable goods, okay, we can't wait for a higher price. See, what did I tell you in a law of supply? That more price, more supply. But for perishable goods, perishable commodity, can I wait for a higher price? No. So if I wait for the higher price, till that my goods get damaged. So I have to sell them at whatever price I get in the market. So that is about perishable goods. Perishable goods को जितना भी price मिलेगा, कम price भी रहेगा, we will supply more. So again here, this is the against the law, because law says more price, supply will be more, and here more price supplies, less price supplies more. Clear? Next is urgent need of cash. See, when someone has a need for cash, okay, you need urgent cash, then at that time you don't wait for the higher price. Okay, you rather sell it or at a whatever price you get. See, I have one example. Okay, I own a mobile phone, okay, and that phone is of rupees 30,000. Okay, if I had purchased for a 30,000, okay, just like a 2 months before. Okay, now because of some need of cash, if it's some need of money, I want some urgent money, I went to the market and I for sell my phone. Now one of them was offering me 18,000, one of them was offering me 16,000, and one of them was offering me 15,000. So but obvious, 18,000, 16,000 and 15,000. ओके, नाउ एज अ सेलर आप आपका मोबाइल किसको बेचोगे? यस मीन्स 18,000 वालों को ही बेचेंगे ना. क्यों? बिकॉज ही इज ऑफरिंग मी मोर मनी. बट वो बोल रहा है, मैडम आप मोबाइल आज दे दो, ओके, पैसा मैं 1 महीने बाद दूंगा. ओके, और लेकिन जो 15,000 वाला मोबाइल परचेस करने वाला है, वो बोल रहा है कि मैडम पैसा अभी के अभी मिलेगा. Okay, now imagine your need of money. Will you wait for that 1 month? Will you wait for 1 month for that 18,000? No, you will sell right now at 15,000. So you see, when you have urgency of cash, you can't wait for the higher price. Okay, clear everyone? See, if you are having need of cash, okay, and you want to sell something, some commodities, then आप ऐसा नहीं देखोगे कि कितना हायर प्राइस मिल रहा है. वॉट एवर प्राइस यू गेट, यू विल सेल फॉर दैट प्राइस. क्लियर? नेक्स्ट, रेयर गुड्स. नाउ रेयर गुड्स आर एंटिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एंटिक्स गुड्स. अभी नाम ही रेयर है. ओके, नाउ रेयर एंटिक गुड्स, ना रेयर एंटिक गुड्स जो रहते हैं, ओके, हायर प्राइस को ही सेल करते हैं. यस, आई नो दैट हायर प्राइस को ही सेल करते हैं, बट कैन यू इंक्रीज दैट सप्लाई? टेल मी.
ओके, तो फिर वो रेयर गुड्स कैसे होगा? अगर वो हायर प्राइस पे जा रहा है, ओके, कैन यू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ दैट रेयर गुड्स? ओके, हमने लॉ ऑफ डिमांड में सीखा है, मोर प्राइस देन सप्लाई विल बी मोर. नाउ एंटीक गुड्स का प्राइस, ओके, अगर हायर है, ज़्यादा है, तो सप्लाई भी क्या होना चाहिए? लॉ की सबसे सप्लाई भी ज़्यादा होना चाहिए. बट एज दे आर द रेयर गुड्स, कैन यू ऑफर इट मोर? नो. नहीं तो फिर वो एंटिक नहीं हो सकता है. ओके, सो रेयर गुड्स आर ऑल्सो इन एक्सेप्शनल लिस्ट ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. क्लियर एवरीवन? सो वी स्टडीड दैट there are some exceptions to the law of supply, like supply of labor co. See, for higher wages rate, worker will work for a particular time, but after a particular time he will refuse to work more for higher wage rate. That is why this is exception to the law of supply. क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई बोल रहा है मोर प्राइस मोर सप्लाई, बट हियर एट वन पॉइंट labor refuse to work more. Okay, so this is exception. Next is agriculture goods. Agriculture goods is depends upon weather. Okay, if the weather is unfavorable and there is more price for agriculture goods, will you supply more? No. So here more price but supply is less. So again this is what exception to the law of supply. नेक्स्ट इज अर्जेंट नीड ऑफ कैश, नीड फॉर कैश. अगर आपको कोई चीज़ की बहुत अर्जेंट नीड है, ओके, अगर आपको कैश की पैसे की बहुत नीड है और आप कुछ चीज़ बेच रहे हैं, उनको मार्केट में उतना प्राइस नहीं है, फिर भी आप उसको सप्लाई करोगे या नहीं? यस, करोगे. सो दिस इज व्हाट, फॉर लेस प्राइस यू विल सप्लाई मोर. सो अगेन दिस इज अगेंस्ट ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. पेरिशेबल गुड्स. पेरिशेबल गुड्स मीन्स जो गुड्स जल्दी खराब हो जाते हैं. So they are also exceptions to the law of supply, because we will not wait for higher price for perishable goods. We will sell at any price because they are perishable goods. They are going to damage later on, right? Next is rare goods. Rare goods means जो कभी कभार मिलने वाले चीज़ें होते हैं, एंटिक्स गुड्स जो होते हैं, ओके, वो ज़्यादा प्राइस पे ही सेल होते हैं. आई अग्री, बट इफ़ प्राइस इफ मोर देन रेयर गुड्स का सप्लाई भी ज़्यादा होना चाहिए एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई. बट इन रेयर केस इट इज़ नॉट पॉसिबल. इफ प्राइस इज मोर, सप्लाई विल बी लेस. सो अगेन दिस इज द against the law of supply. So that is why it includes in the exceptions to the law of supply. So clear everyone that what are the exception to the law of supply? See, in law of supply we studied supply is having positive slope, upward moving curve. But when it is a topic of exceptions, then supply curve is downward sloping curve, because there is indirect relation. When price more, supply is less. So in exceptional case, supply curve is downward sloping curve. Clear everyone? Okay, thank you.